सर आपने इंसानों की तो कई बीमारियों के नाम सुने होंगे। हाँ। आजकल नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। हाँ। कई लोग मर भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही कुछ बीमारियां जानवरों के अंदर भी होती हैं जो ओह बहुत ही खतरनाक होती हैं ओहो और जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं ये होगा। है। आज उसी से संबंधित एक वीडियो हमने लगाया है और कैजुअल ज्योग्राफिक नाम की ये चैनल है अच्छा जिसकी अच्छा वीडियो हम देखने जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब सब देखो, जहाँ तक क्या विधि का विधान है कि जहाँ पर जिंदगी है मौत भी सुनिश्चित है। अब उसमें ये है कि चाहे वो आदमी के साथ हो रहा हो, जानवर के साथ हो रहा हो, पशु पक्षी के साथ भी हो रहा हो, अगर वो कोई भी यहाँ तक अगर आदमी में जान है और वो जिंदा है तो मौत का भी उसका कोई ना कोई मानना है। अब उस चक्कर में बीमारी भी आना है उसमें। अच्छा, उसमें आदमी का कह दो ये या जानवर का कह दो, ये बात आज से नहीं युगों से चलती भी आ रही है। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। भाऊ मैंने तो यार वो बीमारी के जैसे कि एक बीमारी का तो सुना है मैंने। हाँ। और वो आती ज्यादातर उसमें मुर्गा मुर्गी का। हाँ। और मुर्गा मुर्गी के अंदर जो बीमारी आती है तो पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म जो रहते हैं उनके हाँ। वो पूरे नाश मिल जाता है, उनका मर जाते हैं जानवर। तो वो मुर्गा मुर्गियों में आती है वो बीमारी। तो मैंने ये जरूर सुना। नहीं, अब ये सर अपने को कौन से जानवर की बीमारी के बारे में बता रहे हैं। चलो अपन वो भी देखते हैं, लगाइए सर, लगाइए। अबे spooky season. You knew this was coming. We're always talking about all the ways nature and the things in it can put you on a shirt, but we never talked about how diseases can have animals permanently parallel to the ground. So that's what this video is, animal diseases that are rated R, for the regret I feel when I see what researching them has done in my search history. And of course, viewer discretion is very much advised, especially for disease number 1. What's a Halloween video without a jump scare? This photo was taken just outside the Caribbean Bay Hotel in Zimbabwe. बाबू भाई मेरे को तो ये बिना बालों का बाल का बंदर दिख रही है, मेरे को सोच के डर लग रही है यार। देख अब ये वाकई में यार समझ सही बोला कि बीमारी तो यार अब अपन खाली उसको देख रहे हैं और अब अपने को देखने में डर लग रहा है, सामने होगा तो उनको सामने जान नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे बाबू भाई यार। अब आप इंसान तो क्या अपनी बीमारी बता देता है, मेरे को पेट दुख रहा है कि सर दुख रहा है कि जो भी हो रहा हो। बाकी जानवर बेचारा वो किसको बताने जाएगा अपनी बीमारी। बिल्कुल सही बात है, उनका तो मालिक ही है। बिल्कुल सही कही जाती है। What appears to be a hairless baboon. The deep-pelted primate appeared to be an outcast, only following her troop from a distance, almost as if she had been rejected for her appearance. And according to a nearby vet, the most likely cause for this abandoned baboon's condition, mange. Mange is a nasty-looking disease caused by parasitic mites burrowing into the skin, where their collective feces can cause severe allergic reactions and an unbearable amount of itching. That's why the main calling card of mange is turning animals into the most down bad version of themselves. And while the word mangy is usually an insult reserved for dogs, यार बाबू भाई अपन जो कहते हैं ना यार वो खुजली वाला कुत्ता जो बाल वाल सब निकल जाते हैं, तो वो बीमारी दिख रही है मेरे को ये। अब यार इंसान हो तो मुंह से बोल रहा ये बेचारे क्या बोलेंगे यार, ये तो खाली सहन नहीं कर सकते खाली बेचारे यार। these mites can be a certainty from anything from foxes to bears to porcupines, occasionally birds like eagles, and many, many more. In fact, the legend of the chupacabra was more than likely jump-started by a severely mited-up coyote. And in 1996, there was an outbreak of sarcoptic mange that grieved a family of mountain gorillas in Uganda, even expiring one of their babies. बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं। और बात अगर ये एक दफे अगर किसी को लग गई और पूरा परिवार को सब बोल देती इतनी खतरनाक बीमारी। The mites themselves aren't a death sentence, but they slowly weaken the target, making them much more vulnerable to infections. And they can easily spread, especially if you're a wombat whose burrow mates with a walking mite mosh pit. The mites are so persistent that in Pennsylvania, a black bear with more than 50% hair loss is considered a lost cause. And not only is it retired from life, it's also incinerated so the past tense bear can't possibly infect any others. And yes, mange is zoonotic, meaning it can be passed on from animals to humans, and when that happens, it's called scabies.
To be fair, it's normally easy to treat in people, but those with weak immune systems or those taking immunosuppressants can find themselves gatekept from a life of comfort. बाबू भाई हाँ सही बात मत बोलो, क्योंकि उम्र वालों पे सबसे ज्यादा असर होता है बीमारी का। हाँ। जैसे तुम जैसे हो, हाँ तो जैसे कुत्ते को खुजली दिखे, तुम्हारा को खुजली हो रहा तो मुझसे 10 कदम दूर चला करा करा, बिल्कुल यार, क्योंकि ये हवा के द्वारा तो फैलती है ये। बिल्कुल यार, सही कह रहे हाँ। थे। There's also Demodex mites, which shack up in hair follicles, and even a couple species that make their home in the human eye. So yeah, mange just might be the most aesthetically upsetting ailment here. The polar opposite of the next disease, because where mange is visually visceral, Zucosis is almost purely psychological. You've probably heard of the condition where animals in captivity do the same thing over and over with no goal or purpose, almost like they're in a trance. And one of the most popular examples of this are those videos of elephants swaying back and forth. अच्छा ये सब अपन ये देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जगह कुछ दिखा दिया, लेकिन अब मैंने बोला कि इसको कोई वो खत्म नहीं दिखाया, वो तो कोई बेचारा कोई तकलीफ में अपनी तकलीफ सही कर रहा है, लेकिन अब बोले किसको बोले, बाप रे बहुत बुरा हुआ था यार। Except Zucosis is much more than that. Of course, you have your swaying and almost neurotic pacing around their enclosure, but the Zucosis signature also includes excessive grooming, personal punishment like self-biting and self-mutilation, turning puke into an infinite food glitch, and coprophagia, even in animals that wouldn't normally do it. But the disturbing part is, like mange, it's believed that Zucosis can also be contagious. If an animal is housed next to one exhibiting the stereotypes associated with it, chances are that same animal will too. यार क्या है बाबू, ये जो फैलने वाली जो है ना बीमारी, ये खुजली हुई या कुछ भी हुआ, ये बीमारी मेरे को बहुत डर लगता है। और ये कब किस टाइम पे आ जाए अपने को पता ही नहीं चला, और अपने को बड़ा लक्षण आ जाए, डॉक्टर के पास भी जाए तो फर्स्ट को नहीं तुमको ये नहीं ऐसा हुआ। ये बात सही है तुम्हारी यार। This captive psychosis is likely triggered by a lack of stimulation and enrichment, and it's more common in higher intelligence animals, especially those that would normally have a wider range. Elephants checking both boxes is likely why 40% of captive turned pachyderms show symptoms of Zucosis. Orcas are one of the smartest non-human creatures alive and can travel well over 40 miles a day for food. And almost a year ago today, in 2022, a captive orca named Hugo tragically resigned from reality after violently slamming into his tank wall until he suffered a life-ending aneurysm. अपन ये देखते बातें हैं कि जानवर बहुत खुश रहते हैं अंदर, बाकी वो अपनी बीमारी कैसे बताएं, वो अंदर अंदर बहुत दुखी में रहते हैं, वो कि क्या तकलीफ है उनको। यार कुल मिला के ये है कि इनको कैद क्यों कर दिया, जब तक मेरा मन है कि वो तो उसको कैद नहीं करे तो उनका कुछ हो सकता है। And in 2005, a mother hamadryas baboon groomed her baby so excessively that he looked like he came out the womb beefing with wizards. To be fair, we can't really prove that this was Zucosis working overtime, but bro got the Mr. Clean Cut. That ain't a fade, it's a flea. But the most popular and probably most depressing case of Zucosis was Gus. Gus was a polar bear that lived in Central Park Zoo for 25 years. At one point, visitors and keepers noticed that Gus would spend all day swimming in figure eights, sometimes for up to 12 hours straight. Keep in mind that polar bears can cover nearly 50 miles in a day searching for seals. Not only did the zoo spend 25 grand on therapy for the bear, Gus went on to make history as the very first zoo animal. यार तूने चला कर उसको केस करा क्यों? एक तो तूने उसको केस भी किया, 25 लाख खर्च भी करे, और उसको उसका अगर तू उसको आजाद छोड़ देता नहीं तो वाकई में वो उसका कुछ इलाज हो जाता है या कुछ अपनी जिंदगी को संभाल सकता था यार वो। To be put on Prozac. Speaking of which, the 25,000 bones of behavioral therapy basically amounted to the therapist saying, "It be like that." This isn't an anti-zoo video or me trying to morally grandstand to y'all. I think zoos have the potential for a lot of good and a lot of bad. It's just that the bad can lead to a chronically pilled out polar bear. But wait, it gets darker. Because with how far removed humans have gotten from nature, there's a legitimate fear that humanity as a whole could be suffering from Zucosis on a global scale. That joke about us being no different than ants stuck in a death spiral becomes less and less of a joke as time goes on. भैया कुल मिला के ये है कि अगर ये जो चीज़ अगर फैल रही है तो जानवर तो ठीक है, इंसान भी चपेट में आ सकता है। इतना खतरनाक मामला देख लो सामने कोई। Do you remember the Will Smith movie I Am Legend? You know, before his wife publicly neutered him and then smoked both his family jewels in 2-packs? Well, the post-apocalyptic movie started with a doctor attempting to re-engineer the measles virus in an attempt to find a cure for cancer, instead infecting 99% of the human race. A pretty good example of what can happen when humans try to play God with the natural order. Another example is what happened in Florida, specifically Silver Springs State Park. It's Florida's very first tourist attraction, famous for having a couple Tarzan movies shot there. And in the 1930s, tour boat operator Colonel Tui was looking for a way to spice up his jungle cruise ride.
So he brought in 6 rhesus macaques and had them placed on a small island in the park. And it was at this moment they fucked up. Apparently, nobody involved was told that the monkeys could swim, and the moment they touched down on dry land, the macaques proceeded to swim out to the mainland. And following lots of multiplying without a calculator, there are now currently hundreds of rogue macaques. अब अंजनी तोड़ा को काम हो गया ये और इतनी बड़ी उनसे गलती हो गई उस बंदर का वायरस इंसान में भी आ सकता है बिल्कुल आ सकता वो कितनी स्पीड से फैलेगा with a good number of them carrying a deadly herpes virus. Herpes B is an incapacitating condition that can cause severe brain inflammation, permanent neurological damage, and a permanent lease in a casket-shaped condo. Now, fear-mongering aside, the chances of catching it from a monkey are incredibly rare, but not rare enough to be zero. In 1997, a researcher was working with a rhesus when she was splashed in the eye by indeterminate fluids. Even after immediately flushing her eye out for several minutes, the 22-year-old died December 10, 1997. अभी तो कितना खूबसूरत बच्चा रही उम्र भी कितने कम उसमें मरी कितने दुख की बात है कितने कम उम्र मरा यार बताओ यार Almost exactly 6 weeks after first being exposed. According to the Center of Disease Control, since 1932, there have been 51 cases of people being infected with the B virus, with 21 deaths and an 80% mortality rate for those untreated. That same fatal virus is currently being backpacked. यार बाबू भाई मेरे को तो वही बंदर है ना वही दुख देख लिया वो उसी का वायरस फैल रहा है By up to a quarter of the hundreds of macaques running around the Sunshine State. Worse, it's believed they shed the potent virus through their saliva. So far, there's no known case of one of these Marion County monkeys passing off the virus to a human. The problem is, the monkeys have managed to lose their natural fear of humans, and there was even one incident where the park had to be shut down. अब तो थाईलैंड के अंदर में शेर के पास जा चुका हूँ उसके साथ में कर चुका हूँ लेकिन ये जो बंदर ये तो बड़ा खतरनाक इसको देख मेरे को लग After a family was threatened and chased by an especially malicious macaque. It's the worst kind of invasive, and it's 100% our fault, and although the virus-peddling primates haven't caught a human body, it's definitely one of those cases of F around and find out. One of the most unsettling diseases in nature is a sickness that affects deer, known as chronic wasting disease, called so because it essentially destroys the animal from the inside out. In fact, this type of disease is a transmissible spongiform encephalopathy, a name that literally comes from the fact that it causes several sponge-like holes in the brain. It's like the forbidden final boss of trypophobia, and it's caused by a single misfolded protein known as a prion. This prion triggers a chain reaction where the only outcome is a canceled life subscription, and the only thing the victim can do is wait for the sweet release of death. यार बाबू भाई ये तो खाली बस दिमाग की बीमारी है और मरीज तो सिर्फ उसकी मौत का ही इंतजार कर सकता है यार सही कह रहे अब वो भी जानवर अब बेचारा बोलेगा तो क्या बोले इंसान हो तो बोल देगा हम लोग ये हो गया वो क्या बोलेगा हाँ ये बात सही कह रहा हूँ Here's what the endgame of a deer with CWD looks like. It starts with a misfolded protein affecting and altering perfectly normal proteins. It's almost like a cellular level cheese touch, and the moment it starts, it's already over. Step 2 includes the prions exploding in numbers exponentially and accumulating in the body. The whole time the deer, elk, or moose looks and acts perfectly normal. The deer can walk around with this disease for 2 whole years before the chronic जो बीमारी है वो एकदम अपना नहीं दिखाती वो हम 2 साल भी अगर हो जाए तो 2 साल बाद भी ऐसा दिखाती फिर तो आप ये मान के चलो क्या अंत पक्का फिर मौत उसमें becomes critical. Eventually, it escalates to the point where the prions manage to break into the blood-brain barrier, where they start destroying neurons, putting enough holes in the brain to get it cursed out by an octopus, and slowly wasting the poor, unexpecting deer. Deer with CWD seem unable to process anything around them, including danger, and if predators or playing freeze tag on the freeway doesn't take them off the senses, they die a slow and painful death to starvation as their brains shut down. The worst part is, the nightmare doesn't end once the deer does, since the prions responsible can exist in an area years after the victim, and can even be absorbed by plants in contaminated soil. That's assuming they don't just leach into groundwater. In fact, the only surefire way to eliminate a prion is literally that.
Fire. Except it's not as simple as cremating a casualty. That'd be too easy. It's said that it takes heat at a minimum of 900 degrees Fahrenheit or 482 degrees Celsius to properly pack up a prion, and some sources say to hike that up to 1800 to be safe. But the part that makes prions one of the most horrific things not native to a horror movie is where they come from. It's believed there are three main factors that cause prion diseases. Genetics play a relatively small part, with only 10 to 15% of cases in people being attributed to them. The second and by far most common cause is the disease being sporadic. Basically, that just means that not even science can fully explain where they come from, but that it's like it happens out of nowhere. यार बाप रे बाप, ये तो मान के चलो बहुत ही घातक बीमारी है। क्या कहते हैं वो एक एक चीज को लेकर है ना, वो कह रहे कि जो साइंटिस्ट है, जो जानकार है, वो भी आपको अच्छी तरह से एकदम नहीं बता पाएगा। इसके ऊपर और भी ज्यादा शोध की जरूरत है। And the third is an infected deer contaminating something like a water source or a feeding station with body fluids and passing it off to the next. यार ये सबसे जो चलो जो पदार्थ है उसके बाद तेजी से फैलेगा, वो तो और घातक दिख रहा है लोगों को। हाँ। And remember, not only can prions insist on existing years after the fact, keep in mind that most infected deer look no different from any other right until it's time to disconnect from interface eternally. That means that the three main causes of wasting disease are completely RNG, and that is remarkably terrifying. And it's not just deer that can get packed up by prions. There's mad cow disease in cattle and scrapie in sheep. यार खाली ये मांगी जो खाली जो बीमारी खाली हिरण से सीमित नहीं है, गाय भी हुई, भैंस भी हुई, या और कोई सब में हो सकती है। Named after the fact that it can cause them to compulsively rub up against things like fence posts until they literally scrape their wool off. There's even a human equivalent, Creutzfeldt-Jakob disease. And while there's no known reports of a human ever catching CWD, specialists have warned that with the thousands of CWD-infected animals eaten by people a year, there's growing concern that the disease may eventually be transmitted to people. ये तो बात तो सही है यार, इतनी खतरनाक बीमारी जो लोगों में फैल सकती है। सवाल ही नहीं भैया यार ऐसे तो बाबू भाई, इसका तो कोई बीमारी का तोड़ ही नहीं है यार। खुदा ना खास्ता कभी अपनों को हो गई तो क्या करेंगे फिर अपन? इलाज ही नहीं, तूने कहना कि आप सिर्फ आप हो या जानवर, जिसका अगर बीमारी यहाँ है उसका इलाज तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसका मौत का ही करना पड़ेगा। मौत आपको छुटकारा नहीं देते, इसके खिलाफ कोई इलाज नहीं, कोई वो नहीं। But maybe it's still a lot better than the last and in my opinion the most horrific disease in this video. Because not only is rabies one of the harshest death sentences nature can serve, it is 100% transmissible to humans. Rabies is said to bury nearly 60,000 people a year, and since the most common way to get it is through dog bites, it's the worst in places with a high stray population. यार वाली बीमारी है बाबू भाई, मेरे को ये रेबीज जो बीमारी होती है ना, जो कुत्ता काट लेता है तो 14 इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं अपने को, वो है यार ये। वो इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर वो इधर से लग जाए ना, आदमी पानी खाली मुंह पर अगर वो उसी में मर जाएगा। इतनी खतरनाक मामला है। Which is why India, a country that criminalized murking stray dogs, has about 20,000 names crossed off the census a year by rabies. And it's children that are especially at risk, with about 40% of deaths coming from those 15 years old or younger. इसमें ये तो बात सही है बाबू भाई, ये बताया हमने कि हमारा भारत देश ऐसा है कि सारा कुत्तों को पाल रखा है, और हमारा वो राइस जो आता है ना, वो उसको कुत्तों का बहुत डर लगता है। इसलिए हम डरता है कि एक ने काट लिया तो समझ लो चलता इंसान लगो ना अनिश्चित है, अगर वो नहीं लगे तो ये दोबारा Here's what it's like to be turned into a statistic by rabies. It starts with the virus entering the peripheral nervous system, usually through a bite. Then it travels inside you through nerves until it reaches part of the central nervous system, or the spinal cord. From there, it's a straight shot directly to the brain, and at this point, you can start drafting your will because ain't no way. इतना खतरनाक मसला इसका यार। नाम कर लो। While you can treat the virus before it reaches the brain, once it does, you're almost guaranteed to become a wuzz. The virus then multiplies, then spreads throughout the body, slowly killing you from the brain out. But the underrated and truly sinister aspect of rabies is how it seemingly rewires your brain for its own purposes. One of the telltale signs of rabies is a crippling fear of water, where just the sight or suggestion of it can cause incredibly painful spasms in the throat and larynx. अपने वहाँ जो कुत्ते होते हैं ना, जिसको काट लेता है उसको हड़क्या हो गया, ये साला वही वायरस रहता है। वो कुत्ते को उसका एक ही
वही है ये। हाँ At the same time, the virus attacks the salivary glands, causing excessive drooling and the foaming at the mouth the disease is famous for. And that's because the virus is most concentrated in the mouth, and swallowing or drinking water would dilute it. So the hydrophobia helps keep the mouth and all the nastiness inside as potent as possible. And that's not the only way rabies manipulates its mark. There's believed to be 3 stages of rabies in animals. You got the prodromal stage, and that's where the animal might start showing minor changes in behavior. And then you got the phase likely everyone associates with rabies, the excitative stage. It's been called furious rabies since it's characterized by heightened aggression and random outbursts of violence. भैया तुम्हारे तो यार इसकी काटने से कि इंसान तड़प तड़प के मरता है। अब मैं तो ये देख के तेरे को सोच के हो रहा हूँ कि वो भगवान ने करे, लेकिन इसका कोई वो भी नहीं है। लेकिन बाकी में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। Animals that would normally be wary of people, such as foxes, can attack completely out of nowhere with bites. And remember, being a water bigot just makes that bite that much more toxic. And then there's the paralytic or dumb stage, where the animal appears unaware and disconnected from the world around it. This is where you might see a normally introverted mammal show zero fear in humans. But don't be fooled, they're still liable to bite to serve the virus's purpose. The nightmare usually ends with the animal flatlining to respiratory arrest as its body finally just gives up. And your fate is almost no better if you're a human, since rabies has one of the highest KD ratios of any disease, even though it's also one of the oldest. ये वीडियो देख के तो मेरे को एक डर तो मेरे को लगा, एक सोचने को मजबूर करेगा बिल्कुल अपने को सावधान और होशियारी से चाहे हो ये रात मैं अपने बिल्कुल होशियारी से लगी। अब समय को तो मारने के किसमें क्या, अब वो कुत्ते भी मिलेंगे और दूसरी जगह मिलेंगे। अब वो कहना है कि इसकी जो इसका खतरा जो है वो कभी भी किसी टाइम को कहीं भी बढ़ सकता है। अब आपने कब तक ध्यान रखिएगा, ये भी सोचो आप। इसके अंदर इतनी सारी बीमारियां बताई और हर जानवर की बताई है। वो मेरे को सबसे ज्यादा डर जो लगा है वो कुत्तों से लगता है मेरे को, क्योंकि कुत्ता के अपने वहाँ हर किस्म के कुत्ते रहते हैं साले, जंगली भी, खजेले भी रहते हैं, कई तरह की बीमारी के रहते हैं, क्योंकि कुत्तों से सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए अपने को। ये क्या है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि अपन क्या है कि कुत्ते से अपन सबसे कहना, अब ये शेर हुआ, लकड़बग्गा हुआ, हाथी है, इनके वजह अपन समझाते नहीं हो तो बाई जी में कोई अपने दिख गए तो दिख गए। कुत्ते जो है 24 घंटे कभी गली में कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई सी जगह ऐसी नहीं कि जहाँ कुत्ते नहीं हो, तो इनसे पाला। तो आपका जो ज्ञान है बिल्कुल सही, मैं मानूँ अपने को इनसे बचने, क्योंकि ये इनका पाला अपने से 24 घंटे पड़ा। ये बात सही है बाबू। मैं कभी जाता हूँ ना कहीं काम पे भी, जहाँ साले कुत्ते पालते नजर आते हैं लोग, कुत्ते को पहला बोल देता भैया इसको बंद कर दे बस, जब मैं काम करूँ, मेरी बहुत फटती कुत्तों से। सवाल ही नहीं भैया, कब किचन क्या कर ले, वो तो कहेगा तुम हमको बोले इसको बंद कर दे भैया। हुआ हमारे जो अमेरिका का दर्शन है वो कमेंट में हमसे पूछते हैं कि तुम कुत्तों से इतना क्यों डरते हो, तो मैं ये बता देता हूँ, कुत्तों को डर इससे लगता है कि आपको जो कुत्ते आप पालते हो वो उसको टीके लगते हैं, जबरदस्त उसका इलाज उसके बाद कुत्ते पालते हो। हमारे तो ये चीज़ तो कोसों दूर है, ना तो कोई टीके लगते हैं ना किसी से चलेगा कुछ, वो तो इस्लाम को कुत्तों को बहुत डर लगता है। सही बात है बाबू। जैसे कि आपने हमारे को बताया है कि इस मूवीज के अंदर के जैसे कि कुत्ते हमारा वहाँ हजारों तरीके रहते हैं, खजेले जिन्हें काय की बीमारी के वो हमें थोड़ी मालूम, और ऐसा आवारा जिसी गर्दी जैसे घूमते रहते हैं, किसको काटना उसको काटना, वो कोई पकड़ता भी नहीं है, कोई पकड़ता भी नहीं और वो खतरे गल देते को मैंने इसलिए मैं कुत्तों में बहुत डर लगता है। और भाई अपना जैसे कुत्ते तो पकड़ते हैं नगर निगम वाले, बाकी पकड़ के लेके जाते हैं, वापिस आ जाते हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं एकदम से, बस वो वही बोले ये नहीं। अब क्या है बोलिएगा, इंसानों की कोई अगर कोई बीमारी होती है तो उसका वो सर्च होता है, उस पर इलाज हो जाता है, दवा बन जाती है। अब ये जो कुत्ते हैं वो ये जो बीमारी है इसका जो है वो तो इलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं, तो फिर वो चीज तो मसला है। तो क्या है बाबू भाई, अब जो बता रहा हूँ जैसे इंसान बीमार होता है तो उसकी दवाई तो खुद बना भी लेगा और ले भी लेगा, अब ऐसे जानवर बीमार होता है तो वो क्या करेगा,
वो बताएगा क्या? नहीं वो नहीं मजा करती, इसलिए उसकी वीडियो बनती नहीं, वो इस वाला काम है। फिर वाकई में साहब ये जो जानकारी बिल्कुल सही साठ तरीके के कैसे में ये आदमी अगर होशियार रहे तो खैर मौत तो अगर जिंदगी अगर दी है तो मौत तो आने वाली है, लेकिन ज़्यादा हो सके अगर सावधानी अगर बरते तो कुछ पल की जिंदगी वो जी सकता है। मान लेगा कि सभी को है, चाहे वो जानवर हो, कोई इंसान हो या पक्षी हो, क्या मैं हाँ ये कुल मिलाकर वीडियो बहुत शानदार, बहुत अच्छी लगी। इसी तरह वो किसी जानकारी की वीडियो के साथ दोबारा आपकी सेवा में फिर उपस्थित, तब तक आपको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।